Alright guys, so welcome back to your channel Cyber Community. In this video, we are going to show you that how you can install different kind of operating system on VirtualBox and even the VirtualBox as well. So as you can see on the screen, there are different kind of operating system. Number one, Kali Linux, Ubuntu, Parrot OS, Linux, and there are servers which is Windows Server 2022, 2019, and the Ubuntu server as well. So now, if you don't have the time, so if you are definitely are going to close this video, but before that you can save this video because it can really helpful for you in future whenever you will be having some time, correct? So enjoy this whole video and let me know if you have any kind of doubt. So please subscribe and like this video that will be very helpful for us and that will motivate us to make these kind of contents for you. We are going to discuss that how we can install VirtualBox step by step. So let's start. Number one, what you have to do, you have to go on Google and just hit VirtualBox. The first link is already showing the Oracle VirtualBox. So what you have to do, you have to just click on it. So यहाँ पे click करना है आपको and then you can see here is one of the option to download VirtualBox. ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअल में कौन सा करना है तो you can directly go in this download section which will looks like this page. तो आपको यहाँ से अगर मैक के लिए करना है तो मैक पे क्लिक कर सकते हैं, विंडोज़ होस्ट के लिए करना है विंडोज़ के लिए कर सकते हैं, जो भी आपका आपका जो रियल विंडोज़ है। इन माय केस इट इज़ विंडोज़, तो मैं विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली सेम पेज पे आपको लेके आएगा। ठीक है, तो मुझे करना है विंडोज़ होस्ट के लिए, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन विंडोज़। Now it is asking me to download. It is near about 105 MB. So let's click on start download and it's very fast. So it is going to be downloaded within 5 to 4 seconds. Okay, 3, 2, 1. Okay, it has been downloaded. Now I'm directly opening this file. ठीक है, अब ये डाउनलोड हो चुका है और मैं डायरेक्टली उसको ओपन कर दिया है मैंने. So let's wait. It is going to install. Okay, so see, it is asking me to click on yes. Okay, let me click on yes. Now it is preparing for download. Now see, here is one of the error it is coming. Oracle VM Virtual 7 needs Microsoft Visual C++ 2019 distribution package, right? So if you didn't, install this, you will have to install it. Let me click on OK and finish. So there is installation error, right? So how I'm going to fix this installation? So VirtualBox C++ 2019 distribute download. So यहाँ से आपको लेटेस्ट सपोर्टेड जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, देयर यू हैव टू गो एंड जस्ट क्लिक ऑन इट. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स हैं. ठीक है, इतने सारे आपके साथ सामने विजुअल स्टूडियो है. नाउ विच वन यू हैव टू डाउनलोड एक्चुअली. ठीक है, तो लेट्स से we are going to download this one, x64. Let's say start download. So generally this error comes very less. ये error आपके पास बहुत ही रेयर केसेस में आएगा. वंस ये एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू अगेन डाउनलोड, सॉरी, अगेन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल VirtualBox. Alright guys, so it is asking me to restart my computer, so let me restart my computer. Okay guys, so the C++ distributable Microsoft Visuals is already have been downloaded. Now, what is the next step? So you have to go again, just let's search VirtualBox. So you need to click on it. Okay, let me click on it and it is going to
install. So let's next. Yes. Now see, here is some warning network interfaces, right? So what actually, if there is any error going to come, we will resolve it. So now let's see. Okay, so it has been downloaded and successfully we have installed it. So let's click on finish and let's see if it is running fine. So it's opening. So we have successfully installed VirtualBox. In case if you are not able to install and if it is asking for something like this VirtualBox extension pack. So what you can do, you can just click on this and there is a file which is going to download. So you have to click on that and that's it. In that case, your VirtualBox will be running. So I hope this video will help you and this is very step-by-step process that how actually you have to download and what kind of error you may face, right? So that's it in this video, and from the next video we will be showing you that how you can install Kali Linux in your virtual machine. We are going to discuss that how you can install Kali Linux in your VirtualBox. अब ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको Kali Linux डाउनलोड करना है। VirtualBox हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है तो आई बटन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आप लैब सेटअप की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है kali.org। ठीक है, हमें डाउनलोड करना है एक्चुअल में OVA फाइल, राइट? तो OVA फाइल यहाँ पे लिख देंगे OVA डायरेक्टली, गेट काली। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद अभी आपको क्या करना है, देखो कि यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स दे रखी है और एक इंस्टॉलर इमेजेस, मतलब कि ये अगर आपको दूसरी चीज़ों के लिए चाहिए तो आप ये इंस्टॉलर इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपने को चाहिए वर्चुअल बॉक्स के लिए। ओके, बैक। ठीक है, वर्चुअल मशीन पे आपको यहाँ क्लिक करना है। वर्चुअल मशीन्स में आपके पास क्या चीज़ है, VMware है, वर्चुअल बॉक्स है, हमारे केस में वर्चुअल बॉक्स है, तो हम क्लिक करने जा रहे हैं वर्चुअल बॉक्स पे। आपको क्लिक करना है वर्चुअल बॉक्स में। आप जैसे ही वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करते हो आपके सामने ये फाइल नेम आती है 2.79 GB। ये आपको जिप फाइल ये डाउनलोड करनी है। मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट डाउनलोड पे। इनकेस अगर आपके पास IDM नहीं है तो ये इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली डाउनलोड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सेक्शन जो है डाउनलोड्स का क्रोम में, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं वीडियो को स्किप करूंगा थोड़ा सा जब तक ये डाउनलोड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 12 मिनट समथिंग ये लेगा। All right guys, so there is only 3 seconds left. Let's wait for it. उसके बाद ये जो जिप फाइल आपकी डाउनलोड हुई है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, सबसे पहले फोल्डर्स को ओपन करते हैं। ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिप फाइल है वी ऑलरेडी हैव दैट। तो हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए 7-zip पे आपको जाना है। मैं डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर, थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फोल्डर बन गया है काले लिनक्स का। ऑलरेडी सेम टू सेम फोल्डर, आपको इस फोल्डर में जाना है डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये आपकी जो मेन फाइल है ये मेन फाइल है आपकी, लेकिन जो एग्जीक्यूट होगी जो फाइल वो फाइल आपकी ये वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट्स से वर्चुअल बॉक्स आप एक बार ओपन कर लो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, नथिंग। सिर्फ डबल क्लिक करना है, वो भी इस पे। ये वर्चुअल बॉक्स आपने ओपन कर लिया और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा। तो डबल मैं क्लिक कर रहा हूँ बस।
अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये देख रहे हो कि अब काली लिनक्स डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है। अभी क्या करना है आपको, अभी डायरेक्टली ये जो स्टार्ट बटन है वहां पे आपको बस क्लिक करना है। तो प्रोसेस आप समझ रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको पहले डाउनलोड करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है, एंड डायरेक्टली जब आप डबल क्लिक करोगे एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट के लिए है, ये डायरेक्टली आपको यहाँ काली लिनक्स करके आपको दिखा देगा, और आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है धीमे धीमे करके, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक लेगा। अब दूसरी चीज ये रहती है कि आईएसओ इमेजेस जो काली लिनक्स के रहते हैं वहाँ पे आपको सारी की चीजें सभी की सभी चीजें देनी पड़ती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक उठा रहा है सारी की सारी चीजें। ओके, तो इसका पासवर्ड में भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। पासवर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं, पासवर्ड क्या है इसका। ओके, पासवर्ड इज काली एंड काली। ठीक है, ये जो पासवर्ड है यहाँ पे देख रहे हैं आप, पासवर्ड काली एंड काली। तो एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग इसे ओपन करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों काली है। ठीक है, कभी भी अगर आप भूल जाते हो पासवर्ड की क्या है क्या नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। इस फाइल में जाओगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जनरली डिस्क्रिप्शन में रहता है। इन केस अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो जहाँ से आपने डाउनलोड कर किया है, लेट्स से अगर ऑफेंसिव सिक्योरिटी से किया है तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले में जाके देखना पड़ेगा कि क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड है। ये मैंने डायरेक्टली काली डॉट ओ आर जी से किया है, तो इन लोगों का जनरली काली काली रहता है। ठीक है, इट्स स्टिल लोडिंग। सो देखो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी ये ओपन हो रहा है, बहुत ही जल्दी इंस्टॉल होता है। आ, देखो ये डायरेक्टली पूछ लिया इसने, तो मैं पासवर्ड और यूजर नेम दे दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड दैट्स इट गाइज, यू कैन सी इट हैज़ बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, और आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके व्यू में आप फुल स्क्रीन मोड कर सकते हो। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड करने के लिए होस्ट प्लस एफ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही होस्ट प्लस एफ यूज़ करोगे आपके सामने पूरी की पूरी ये बिग स्क्रीन में आ जाएगी। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम उबुंटू के बारे में बात करेंगे कि उबुंटू कैसे इंस्टॉल करना है, अब तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स पे। लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है, और उससे पहली वीडियो में हमने बात किया था कि आपको वर्चुअल बॉक्स एक्चुअल में कैसे इंस्टॉल करना है। अगर वो दोनों वीडियोस आपको देखनी है तो आप डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में आपको ओवीए फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि उबुंटू की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको आईएसओ इमेज की फाइल मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं, ओके आई एम सॉरी, ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि ये उबुंटू की वेबसाइट है। ये जो गेट उबुंटू आपको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जब भी डाउनलोड करने जाओगे तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको आईएसओ इमेज मिलेगी। मुझे चाहिए ओवीए फाइल। ठीक है, ताकि आपको इंस्टॉल करने में ज़्यादा झंझट ना रहे, सिर्फ डबल क्लिक करो और इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है लिनक्स वीएम इमेजेस पे। ठीक है, आई होप यू गेट इट। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे कि उबुंटू 20.04 बता रहा है, ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट है वो 23 पॉइंट समथिंग है। तो ये राइट साइड में अगर आप देखोगे ना, ठीक है, ये राइट साइड में एक काम आप ये भी कर सकते हो कि उबुंटू 20.04 यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप उसको अपग्रेड कर दो। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन है उबुंटू 23.04 का, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हो। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे। ओके, ये थोड़ी सी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। इतना रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, 4 GB का रैम होना चाहिए, 125 GB एटलीस्ट डिस्क होना चाहिए आपका,
और ये सीपीयूज वगैरह की जो जो भी डिटेल्स आप वगैरह हैं ये देख सकते हैं। अभी देखो, ये जो आपको किसके लिए चाहिए, वर्चुअल बॉक्स के लिए। और अगर आपके पास आपको चाहिए VMware के लिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे चाहिए वर्चुअल बॉक्स के लिए तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन इट एंड विद इन 5 सेकेंड्स इट इज गोइंग टू डाउनलोड। अब क्या है कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है तो ये एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि आपको एक्चुअल में कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब डायरेक्टली चलते हैं फाइल पे, जहाँ पे फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो कॉम्प्रेक्स फोल्डर में मैं आ गया। यहाँ पे ये फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, समथिंग 2.3 GB। आप देख सकते हो यहाँ पे द सेम फाइल है, इट इज द सेम फाइल, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर पहले बना देते हैं, Ctrl+Shift+N, ठीक है। मैं नाम देता हूँ उबुंटू और मैं इस फाइल को इसमें सेंड कर दे रहा हूँ। उबुंटू फोल्डर में गया, ठीक। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा, यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। तो 7-zip में जाने के बाद extract here directly. Now it will take some time, maybe a couple of seconds. Let's see. देखो, यहाँ पे दो फाइल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और दोनों वर्चुअल बॉक्स मशीन की फाइल हैं, यानी कि OVA फाइल हैं। तो अभी जस्ट डबल क्लिक हम लोग करेंगे और दिस फाइल इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। दैट्स वेरी सिंपल। सी हमें यहाँ वर्चुअल बॉक्स में जाके ये न्यू पे जाके ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नाम दो, फिर यहाँ पे ISO इमेज फाइल सेलेक्ट करो, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका लंबा पैटर्न है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ISO इमेजेस कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस वीडियो में OVA फाइल्स के लिए हमने बात की है कि OVA फाइल आपको जस्ट वेरी सिंपल इजी स्टेप्स में विद इन 10 मिनट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल। आप ये वीडियो देख रहे हो, 5 मिनट की भी ये वीडियो नहीं होगी मेरे ख्याल से, 5 या 10 मिनट से 10 मिनट से कम वीडियो होगी। तो यहाँ पे मैं जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो, जैसे ही डबल क्लिक कर रहा हूँ ये यहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिक उसने उठा लिया Ubuntu 23.04। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट क्लिक करना है स्टार्ट पे, एक बार स्टार्ट पे क्लिक करना है बस, इतना ही चाहिए आपको। अभी देखो, ओके, सो इट इज इंस्टॉलिंग। मीनवाइल आप देख सकते हो कि इसका एक्चुअल में पासवर्ड क्या है, ठीक है। अब ये पासवर्ड पासवर्ड के बहुत झंझट रहते हैं, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में पासवर्ड क्या है। तो सेम उसी वेबसाइट पे हमें दोबारा जाना है, ठीक। और वहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक्चुअल में इसमें पासवर्ड कहाँ पे दे रखा है इसने, इनकेस अगर दिया होगा, वरना हम उबुंटू उबुंटू ट्राई करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, हम सर्च कर लेते हैं पासवर्ड, ओके, गूगल गूगल पे सर्च कर लेते हैं, नो इश्यूज, लिनक्स VM इमेजेस पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पासवर्ड बता देगा। लेट्स से मैं उबुंटू भी लिख देता हूँ तो ये उबुंटू का भी बता देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उबुंटू उबुंटू इज वर्किंग, ठीक। ये यहाँ पे देख सकते हो उबुंटू उबुंटू पासवर्ड है, उबुंटू सर्वर का भी इसने उबुंटू उबुंटू है। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप डायरेक्टली गूगल पे देख भी सकते हो कि एक्चुअल में पासवर्ड क्या है उसका। नाउ ओके गाइस, सो नाउ यू कैन सी द यूजर नेम इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, उबुंटू। सो लेट मी गिव द पासवर्ड हियर उबुंटू एंड हिट द एंटर। So now I hit the enter. Let's wait for couple of seconds. Now, so you can see here that this is the screen of Ubuntu and you can directly go into the terminal and you can use it whatever you want to do. If you want to do some hacking, if you want to do some other activities, so you can do it.
So if you want to update or upgrade it, so just write sudo apt get upgrade, right? This is the command for so okay, sorry, my bad. This should be apt. Okay. Okay, here is the issue. I have now you can see it is going to install. So इस तरीके से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपडेट के लिए कमांड सिर्फ वहां पे चेंज हो जाएगी, अपग्रेड की जगह अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक की थी एक्चुअल में, ये डबल APT आप देख सकते हैं और ये लास्ट में डबल ई हो गया था बाई मिस्टेक मुझसे। तो ये apt get upgrade, दिस इज अ कमांड, एंड अपग्रेड की जगह आप अपडेट यूज कर सकते हो, डिस्ट अपग्रेड यूज कर सकते हो। काफी चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प होगी, आप कैसे इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स वो चीज़ आपको समझ में आई होगी स्टेप बाय स्टेप। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हाउ यू कैन इंस्टॉल पैरेट ओएस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास उबुंटू है, काली लिनक्स है, बट फिर भी आप पैरेट ओएस को क्यों प्रेफर कर सकते हो। सी, अगर आप रेड टीमर हो एक, या फिर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, तो पैरेट ओएस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। पैरेट ओएस को आप इंस्टॉल करें डायरेक्टली, आप टूल्स वगैरह यूज कर सकते हो। पैरेट ओएस में काफी टाइप के टूल्स है जो रेड टीमिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए वेल नोन है। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस इफ यू वांट टू बी अ हैकर एंड इफ यू वांट टू बी गो इन द रेड टीमिंग, अगर रेड टीमिंग में जाना है तो आप एक बार पैरेट ओएस इंस्टॉल करके देखो। बाकी की दो हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे एक्चुअल में आपको काली और उबुंटू इंस्टॉल करना है। तो इन तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। पैरेट ओएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स मिल जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इट, राइट। सो यू नीड टू गो ऑन दैट पैरेट ओएस OVA virtual box. This is the original website, genuine website of Parrot Security, right? So if you want to download the ISO image, then you can go through this link, right? But here what I'm going to show you that you have to download the OVA file. OVA file आपको कैसे download करनी है? See, let me show you. Okay, so let's say Linux VM images, and this link I already have pasted in the description, so you can check it out. So this is a link actually. And now from here, you have to just click on this VirtualBox image 3.8 GB, which is showing, right? So once you will click on this, this is going to be download. Now VMware image is 3.9 GB. So if I can show you Parrot OS security. Now I have already downloaded this file, right? So to save our time, I have downloaded, let me show you where this is actually in the compress section. Okay guys, so here is the download section, and if you can see, here is the option Parrot OS security, right? So what I'm going to do, just right click here, and इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक्सट्रैक्ट फाइल करेगा, ठीक है। सेम लोकेशन में मुझे चाहिए, तो ओके। सी, एक फाइल यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। इसमें अब दो चीजें डाउनलोड होगी, एक आपकी वर्चुअल इमेज डिस्क डाउनलोड होने वाली है, और एक आपका वर्चुअल बॉक्स का एप्लीकेशन इमेज फाइल, यू कैन से वर्चुअल बॉक्स मशीन। सो ये दोनों चीजें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट विल टेक सम नियर अबाउट 5 minutes, so let's wait, and I will skip some of the part of the video because it is taking time, right? So we can't wait for that 5 minutes. सो नाउ यू कैन सी गाइज कि ये जो फाइल है ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, और अपने पास ये तीन फाइल्स है, राइट। ये लॉगिन डिटेल्स है, इसे आप ओपन करके देख सकते हो। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं, इमेज इमेज पासवर्ड, वर्चुअल बॉक्स इमेज कौन सी है, VMware इमेज इसकी कौन सी है, ये सब चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा क्या है एक्चुअल में। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्चुअल
जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है उसको ओपन कर लो आप। ठीक है। वर्चुअल बॉक्स जैसे ही ओपन हो आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। ये देखो दो अपने पास लिनक्स ऑलरेडी है, ये थर्ड लिनक्स है। तो यहाँ पे आपको सीधा डबल क्लिक करना है। मैंने डबल क्लिक कर दिया है। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेट ओएस सिक्योरिटी ऑलरेडी शो कर रहा है, और ये कौन सा वर्जन है, 4.10 है। लेटेस्ट वर्जन 5.0, ये याद रखना। इन केस अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप ऑब्वियसली यू ऑलरेडी हैव द कमांड। इफ यू डोंट नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द कमांड। नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन, जस्ट click on it. So now it is going to install it, and it will take some time, maybe 3 to 4 minutes. That's it. Now you can see guys, it is loading. Okay, so it will ask, okay, could not start the machine. Let me change the network settings. Okay, so now it's working guys, and there was a issue which was coming actually. So let me show you that what actually the issue was coming. द इशू वॉज रिलेटेड टू दिस वन कॉलकम एथोरस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि पहले ही इसमें जो सेटिंग थी, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जो पहले सेटिंग थी, सेटिंग में जाना है आपको, नेटवर्क में जाना है। और नेटवर्क में पहले मेरा था ब्रीज नेटवर्क और ये मीडिया टेक। ठीक है, लेकिन मैंने इसे चेंज किया, मैंने नेटिव नेटवर्क किया। नेटिव नेटवर्क पे आपको करने के बाद ये आपका चल जाएगा। ठीक, तो लेट मी डिस्कार्ड चेंजेस। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में आपको यहाँ चेंजेस करने हैं, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू रन। सो लेट मी शो यू। अर्लियर इट वाज नॉट वर्किंग, you already have seen. So it is installing. Let's wait for a couple of minutes more. ऑल राइट गाइस, सो पैरेट ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे अपने को पासवर्ड देना है। देखो, अब पासवर्ड के लिए अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो दो तीन चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी वो कर सकते हो। लेट्स से कि लिनक्स वीएम इमेजेस पासवर्ड, ये आप कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, नॉट उबुंटू ओनली, बट वी नीड ऑल। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे करेंगे पहली लिंक में, तो आपके सामने सभी के सभी ओएस की लिस्ट आ जाएगी। ये देखो, पैरेट ओएस कहाँ है, लेट मी चेक इट। हियर इट इज द पैरेट ओएस। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सेम है। और इसके अलावा अब और कहाँ पे चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पैरेट ओएस पासवर्ड दे देता हूँ। दैट्स इट। अपडेट योर सिस्टम टू अप्लाई द लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट लेटेस्ट फीचर्स। ठीक है, अभी ये अपडेट करने को बता रहा है, तो आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे टर्मिनल में जाके अपनी सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपकी हेल्प होगी कि पैरेट ओएस एक्चुअल में कैसे इंस्टॉल करना है, क्यों इंस्टॉल करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You that how you can install Mint. Now the Linux Mint, how you are going to download, from where you have to download. I already have given the link in the description, and you can see here that this is the Linux VM images website. So from here you need to download. You once you will go down, and here is the VirtualBox image. You have to click here. Once you will click, it is going to download in sometime, something it is showing 16 seconds. So now here is a trick that I already have downloaded. So now I'm going to show you that how actually you are going to accept. So this file has been downloaded, right? Now I'm going to right click here. So obviously this Linux Mint is going to take time to download, right? So don't think that this is going to download within a second. So it directly depends on your speed, internet speed, and maybe approximately it is going to take 5 to 10 minutes, I believe, if you have a good internet connections. Now,
So here I need to extract it. So I'm going to extract it as a file. So let's extract it. Now it will take some time. You can see here is the Linux Mint uh, folder is already here. Now, meanwhile it is extracting, let me open my VirtualBox, which I already have opened. And you can see uh, the previous three videos which we have installed: Kali Linux, Ubuntu, and Parrot OS, right? And this is the fourth one. Now, in these four operating system, you need to install only one for the lab setup. I don't recommend you to install all these four, but from out of these four, at least one should be in your lab setup. So let me show you. I think it has been completed, right? So now what you have to do, you have to go in this folder. So just double click on it. Now you can see here there is two files. One is VirtualBox machine and the second one is virtual disk image. Now to execute, you just need to click on this VirtualBox machine file. So let me click on this, double click on it, and it is directly going to uh, take all the settings from the VirtualBox. Now I'm going to just start it. So the first startup, it is going to take time because it is going to install. So maybe within 1 or 2 minutes it is going to take. So let's wait for it. Meanwhile, it is installing. Let's see the username and password, right? So if you can see in the description, okay, yeah. So if you can see in the description, there is a link actually which is related to Linux VM images. So you can go through this website. Let me show you what actually the password, Linux VM images and password. That's it. And this link also I will provide you. Now here each and everything you will get all the user and password of different OS which is given by the Linux VM images. So we are going to search for the Linux Mint. Let me see where it is. Okay, Linux slide, we got it. Yeah. So the password and username is it's a Linux Mint and Linux Mint. Now let me go here. Okay, it is installing, just near to complete. Okay, let me cut it down. Meanwhile, let me copy this username and password. So this is the Linux Mint username already given, and let me give the password here. Okay, it is not pasting. Let me, yeah, it is not pasting. So Linux Mint is the password. Let me type here directly and hit the enter button. So that's it, guys. I mean, it is loading, and this is actually what actually the process of installing all the OVA files Linux. So we have installed Kali Linux, we installed Ubuntu, Parrot OS for penetration testing, and red teaming, and this is the Linux Mint, which is one of the very fast Linux, you can say. So that's it in this video. I hope this is going to help you. And in case of any doubt, in case of any concern, you are most welcome to just write your whatever your queries is in the comment section. And definitely I'm going to reply all those your queries. So thank you so much for watching. Bye bye. Take care. We'll meet you in the next video to show you that how you can install Ubuntu server on your VirtualBox. Now, this is the link. I have already given this link in the description, तो आप description में जा सकते हैं एंड यू कैन सी जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है तो ये कुछ तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। अब आपको डाउनलोड को कैसे करना है, ओवीए फाइल जनरली आपको डाउनलोड करना है इजी इंस्टॉलेशन के लिए। तो उबुंटू सर्वर आपको चाहिए, राइट। तो इस लिंक पे डायरेक्टली जब जाएंगे तो आपको उबुंटू सर्वर 22.04 मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये वर्चुअल बॉक्स इमेज आपको देख रहे हैं, आपको जस्ट वहाँ एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन इट इज
redirecting to some other page where it is going to download within 16 or 15 seconds. It will take time sometimes, and it will show that it is downloading. तो अभी मान लो कि डाउनलोड हो गया, राइट? तो लेट मी शो यू, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, बट just a demo purpose I'm just showing it. So see here, I already have downloaded, तो इसलिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने कहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ये रहा। ठीक है, अब देखो, जब ये डाउनलोड हो चुका है, व्हेन इट इज फुली डाउनलोडेड, तो आपको कुछ तो ऐसा .7g में आपको दिखाने वाला है। अभी क्या करना है कि आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट का प्रोसीजर आप जानते हैं, 7zip पे जाना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ठीक है, मैंने ये एक्सट्रैक्ट भी पहले से ही कर रखा है, ये ऊपर की फाइल आप देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की फाइल आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी क्या करना है, इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे दो फाइल्स हमारे पास हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एक्सटेंशन के साथ है। एक है वर्चुअल बॉक्स मशीन डेफिनेशन के साथ, और एक वर्चुअल डिस्क इमेज आपके पास। तो अभी आपको किस पे क्लिक करना है, वर्चुअल बॉक्स मशीन पे। पिछली 4 वीडियोस 5 वीडियोस से हम यही करते आ रहे हैं, द सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, इनकेस कुछ भी इसमें से डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक जस्ट करने वाला हूँ और आपका Ubuntu सर्वर इज गोइंग टू बी स्टार्ट इंस्टॉलिंग इन वर्चुअल बॉक्स। सी, यहाँ पे ऑलरेडी ये इमेज क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं अब बस स्टार्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, अब देख सकते हो कि ये इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। अब इसे इंस्टॉलेशन में मे बी 1 to 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, ये उसका आपके पास रैम कितना है, उसकी स्टोरेज कौन से टाइप की है, HDD है या SDD है। तो जनरली मैं प्रेफरेंस करता हूँ कि 16 GB रैम तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप ये जो जो चीज़ें मैं इसमें सेटअप में दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट 16 GB रैम रहेगा तो इट्स गुड। एंड i7 प्रोसेसर एटलीस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है, कुछ टाइम लेगा। जैसा कि मैंने बोला कि 1 से 2 मिनट टाइम ले सकता है, और ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ठीक है, मीनवाइल लेट्स चेक द पासवर्ड। ठीक है, अभी इसका पासवर्ड हमें जानना है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसका पासवर्ड देख देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब यूज़र एंड पासवर्ड ये ऑलरेडी अपने को दिखा रखा है इसने कि VM इमेज पासवर्ड। ठीक है, तो अपन जाएंगे सीधा लिनक्स VM इमेजेस और सीधा पासवर्ड लिख दो। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो हमारे पास है उबुंटू सर्वर, इसका भी उबुंटू उबुंटू है। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड उबुंटू उबुंटू है। ओके, यहाँ में हमें बता रहा है कि लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ हम पासवर्ड देंगे उबुंटू। ठीक, हिट एंटर, उबुंटू एज अ पासवर्ड एज वेल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये आप लॉगिन हो चुके हो डायरेक्टली उबुंटू सर्वर में। अब यहाँ से आप जो भी चीज़ें आप करना चाहें, A to Z सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपको अपडेट करना है, फिलहाल जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू एग्जांपल। तो लेट्स से sudo apt अपडेट। ठीक है, नाउ इट इज़ वर्किंग, और आप देख सकते हैं कि ये अपडेट होना शुरू हो चुका है। So I hope it is going to help you guys, and this is how we can install Ubuntu server in a very easy steps. So thank you so much for watching this video to show you that how you can install Windows Server 2022 step by step. So the steps are very easy. So once you will enter these keywords on Google, this is something like that. This page is going to open. Now the first link I'm going to open, and just want to show you with the first link something. So there are two options, download ISO or whether you want to download in VHD image. So let me click on both. The first one is ISO, second one is the VHD. Now you can see it is asking for the registration, right? Now it can be little bit hassle for you, and just time wasting for you. But if you want to just register here, and after that you want to download it, it's okay. You can proceed with that. But if you don't want to register, and you don't want to waste your time here, there is another option. So you have to click on this one,
I will give the link of this this link in the description so that you can easily go through that website. So here you need to click it. Let me click on it, and I'm going here. So now here ISO downloads, VHD downloads, you can see there is a lot of options in Chinese, French, whatever the uh, language you want to choose. So I'm going to choose the English United States. Now there is two option, VHD and ISO. So I would recommend to download VHD image. Why? Because uh, there will be no hassle to giving the size, giving the RAM to particular these ISO. In VHD, it is automatically going to take it. So you can directly click on it and it is going to start downloading. You can see it is something near about 9.5 GB. So I am canceling it because I already have downloaded. Similarly, if you want to download the ISO image, you can download it. Now I'm going to show you the both steps if you have downloaded the ISO image also or whether the VHD one. Now let's directly jump onto the where I have downloaded it. Okay, let me go in my folder. Now here you can see Windows Server 2022, right? Let me open my VirtualBox. Here is my VirtualBox. You can see these are the five uh, Linux, or you can say Linux OS and Linux server already installed. So let me go ahead. You need to click on these tools, right? And I'm going to click on this new. Let me click on new. Now I'm going to name this Windows Server 2022, right? Here is the option. If you have the ISO image, you can directly go from here, right? And just click on other and you can select your ISO image. That's it, right? And after that, the steps will be the same. Now, let's suppose you don't have ISO image and you have the VHD. So the same process you have to do. Now in this section ISO image you don't need to choose anything if you have VHD image. So I'm going to just click on next. Here whatever the RAM, whatever the things you want to give. So I'm just giving the RAM something near about 4096. Let me give it more something near about 5 GB, right? And the CPU is, let's say I'm giving it 4 core CPU, just for the purpose. It depends on you. If you will give something between 2 to 4 CPUs, that is enough, I believe. Now click on next. Once you will click on next, it is asking for the hard disk now, right? So I don't want to give the hard disk it because I already have the VHD file. If you have ISO file here, then you can proceed it, right? But I do have the VHD file, so I'm going to choose use an existing virtual hard disk, right? So I'm going to click on it and just click on this folder. Now I can see there is no server here, right? So I'm going to click on add. Go in your folder. Here is the Windows Server 2022, which is the virtual hard disk, that is VHD. I'm going to open it. That's it. See here, virtual image it is already have taken 40 GB. It requires 40 GB. Now in the case of ISO, you will have to define it, right? So I hope you are understanding that VHD and ISO both are different but having the same path. I'm going to click on it. Let's choose it. That's it. I'm click on next, finish. That's it. That has been created. Now I'm going to install it. So I have to click on start. It is going to take some time. So let's wait and don't skip the video because it is very important and you will have to follow it step by step, then only you are going to understand it. So I'm going to wait for it. I'm not going to skip it any of the steps so that you guys can see that how actually it is proceeding. Okay, so it's starting. Let me just bigger the screen. Okay. So generally it is going to take time something near about, if I tell you something, 2 to 5 minutes. Generally it is going to take something near about 2 to 5 minutes.
not more than this. If you have something 16 GB of RAM, then it is not going to take more than this. And make sure guys that one thing is very important here, that if you have 16 GB or RAM, apart from that you should have a very good processor, something like i7 12th generation or 11th generation. That's a minimum, I'm just saying, right? Because whatever we are doing, we all are doing just for the hacking purpose, right? We are just installing it for the hacking purpose and for the SOC operations, you can say security operation centers. So we are going to use in those things. Just this is just a home setup. You can learn a lot of things by just creating these kind of labs. Okay, it is getting ready. So let's wait for more minute. Okay, one thing is more guys, that I'm just showing that how you can install Windows Server 2022. Now the next thing is that it's just a challenge for you, that you have to install Windows Server 2019 in similar way. So in case if you feel any kind of doubt or anything else, I'm here to help you. Uh, uh, you can just join the Telegram channel and uh, ping your concerns, ping your doubt there. I'm going to reply all those things. Okay, it is starting. So it is taking more minute because I already have, installed a lot of VirtualBox here, sorry, OS machines here. So you can see Linux, Kali Linux, Ubuntu, Parrot OS, Linux Mint. So if you haven't watched these videos, you can just click on I button, or you can just go in the playlist as well. Uh, yeah, you can just go in that playlist as well to check all these videos. Now, see here. So I'm going to just click on next, next, accept, and here's the password it is asking. So I'm giving password admin. Okay, click on finish. So now it is finalizing my settings, all those settings. Okay, now it is asking press Control Alt and Delete to unlock. So how, obviously if you want if you are going to press from the keyboard, Control and Alt and Delete, then definitely your Windows actually is going to changed. So let me show you this option here. Go in this input section, keyboard, and you can see here is the option Insert Control Alt and Delete. That's it. Just click on it and it is going to open. Now it is asking the password, so give your password, and that's it. It is going to open for me. Okay, super. It is personalized all the settings. So if you want to just change this screen into the full screen, so you can just click here, full screen mode. Let me switch it. Okay, so you can see it is having now full screen. So let's wait.
See guys, so we have successfully installed Windows Server 2022. Now the Windows Server Manager is going to start here. You can see it will start. Yeah, it has been started Server Manager. Now you can do whatever you want with this Windows Server. You can manage all your Windows machines from here itself. So I hope this video is going to help you, and I have showed the step by step that how actually you have download, you have to install everything. In case of any doubt, I can understand that might be some doubts in your mind. Those doubts you can directly ask me on Telegram channel or might be in the comment section. Whatever you feels is best for you, you can do it. So thank you so much for watching. Bye bye. Take care and have a great day. You can install Windows Server 2019 in your VirtualBox. So basically, I already have shared the link in the description, so you can directly go through it. But let me show you something. This thing I already discussed while installing 2022 Microsoft Windows Server. But let me again show you that if you will go in this particular website, then it is going to ask you the registration part, right? So I can understand this can be hassle for you little bit. But if you don't want to do this, you don't want to give all your details and then clicking on download, right? So there is another option. So I'm going to download from here. You have to go this link. This link is already given in the description. So you can see here there is a VHD download, there is ISO download. So it's depends on your choice. I am going to download this VHD file. I already have downloaded. So you have to just click on it. That's it. And it is going to it is going to download automatically. Similarly for the ISO download. Now, I already have downloaded this, so you can see here Windows Server 2019, right? Now, what I'm going to do, I'm going to open my VirtualBox. So make sure this is the step-by-step procedure, right? I'm showing you the step-by-step procedure. The number one step is you have to download the Windows Server. From where you have to download, I already have given the link in the description. So this is the first step. The second step is that you need to open your VirtualBox, right? So I'm going to open my VirtualBox where you can see there is lot of virtual machines I already have installed, and I have showed you that how actually we are going to install now. So we need to install the Windows Server 2019. So let's click on this tools first. I have clicked on this tools. Now just click on this new one, right? So let's give it the name is Win Server 2019, right? Now here is the option. If you have downloaded the ISO image, you can select from here. You can select from here wherever your ISO image is. But in my case, I do have the VHD, right? That is virtual hard disk image. So I'm going to directly click on next. Now from here, let me give at least something near about 5 GB of RAM. So I'm giving 5 GB of RAM. Processor, I'm giving four core CPUs, right? So it depends on your particular machine. So if you want to give three, that would be better. Two is that is also good, but don't give one. It is not going to open. So because this is not a simple machine. This is server, so it will require the CPU. So I'm giving it 4 core CPU, let's say. So let's click on next. Okay. From here you can see if you want to create a virtual hard disk now, it will require something near about 50 GB, right? But I already have the VHD file because we have downloaded the VHD file, right? So you have to click on this use an existing virtual hard disk file. Now you can see here it is showing Windows Server 2022, but I don't need this, right? There is a lot of things which is already installed over here. You can see which is taken automatically by the VirtualBox. But you need to click here. So I'm going to click here. You can see Windows Server 2019 is not available here. So you need to click here, add, and just go in your file. So I'm going to add from here Windows Server 2019, right? So now it has been attached. So let me click on choose. So I have choose.
Now you can see this is automatically have taken the 40 GB of hard disk, right? So I'm going to click on next, finish, right? So as of now, just remember the steps what you have did. Number one, that you have downloaded the Windows Server 2019, right? Number second, you have just open your VirtualBox and all the settings whatever I have showed you, you have did it. This is the number second. Now the number three is you just need to click on this start button. So I'm going to click on this start button, and you can see here it has been started. So it is starting and it is installing. So it may take something near about 5 minutes. I'm assuming 5 minutes because Windows Server 2022 was started within 5 minutes. So I'm assuming it should take less time because it was something near about of 9.3 GB. Now Server Night 2019 is something near about 8 GB. So let's wait and let's see if it is installing quickly. I'm not going to escape it so that you guys can see. If you want to little bit skip this part, you can, but because it's going to take time something near about 2 to 3 minutes, whatever. And meanwhile, let me show you something. If you haven't installed these kind of, I mean, see, uh, I have installed these things, Kali, Ubuntu, Parrot, and you have this Linux Mint, right? Now there is other like Fedora, CentOS, lot of Linux images, right? Machines. So you have to just install one. If you want to install Ubuntu, that's good. If you want to install Kali, that is better. If you want to be a red teamer, then you can install this Parrot OS, which is a very good one. So you can go for the much faster one, in terms of the OS. Then you can go for the Linux Mint as well. Server we have already shown you. This is the Ubuntu server, and this is two servers of Windows which we are showing. Okay, so it is taking time. Let's wait. So it is getting ready. Let's wait for a couple of minutes more. Okay, let me give it full screen mode. Let's say here it is the full screen mode. So switch to full screen mode. Now, see here, guys. You have to click on next. You have to choose all these things by default. So keep it default, no issues. Next, next, and accept all these servers. Okay, now it is asking for the password, so I'm going to give the password here. So this password is totally of your choice, right? So I have given the administrator password. Keep remember this thing. Keep remember your password.
because you are going to set this password, right? You have set this password. So keep remember that. Now, so it is telling me press Control Alt Delete. So let me Control Alt Delete. Okay, so it is opening the original Windows, right? So what I will do here, it is not working from the keyboard. So what you have to do, you have to just go in this input. You can see here is the input, and in the keyboard section there is Insert, Control Alt and Delete, if you can see here. So click on that directly. Now it is going to open. So now I'm going to give the password. Now it is telling us to, and it is applying all the settings. It has created our profile as well. So let's wait for a minute. Okay, superb guys. So we have successfully installed Windows Server 2019, and you can see this is on your screen. And in a very short time of period, the server manager is going to be started here. Okay, let me click on no. So this is how you have to install Windows Server. I hope the steps are very clear. So now you can see the server manager is started, and whatever you want to do with this Windows Server, you can do. So hopefully this video will be helpful for you.